बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। I am Dr. Umar Farooq. So students, this is the flow chart which we constructed in 6 lectures. Firstly, we studied about various types of matter. Then I talked about particles on which matter consists of. After that, representation of these particles was studied. In the next lecture, I discussed about masses of these particles in AMU unit. And in the last lecture, we studied about masses of these particles in gram units, which is called a mole and contains exactly Avogadro's number of particles. So my first target was to develop this flow chart. इसीलिए मैंने अपने लेक्चर्स में सिर्फ उन चीज़ों का जिक्र किया जो इस फ्लो चार्ट से मुताल्लिक थीं। बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं वो अगले 2 से 3 लेक्चर्स में मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फ्लो चार्ट पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं और आखिर इसकी अहमियत क्या है। तो जवाब के लिए पेश है आज का लेक्चर, which deals with the mass, mole and particle calculations, यानी numerical problems. But before I start, I want to recall some important points from my previous lectures. Atomic masses of some common elements are given in this table. Their unit is AMU, of course. I have compiled only 20 elements in this table. Let me tell you one thing. You can round off atomic mass of hydrogen to 1, but not chlorine and copper. They are used as such in numerical problems. Remember students, atomic mass, molecular mass, formula mass and ionic mass all represent the mass of a single particle in AMU. But if these masses are expressed in gram, they are called molar mass. And molar mass is the mass of 1 mole of atoms, molecules, formula units or ions. Its unit is gram per mole. mass, mole और particle problems solve करने के लिए आपको 4 अदद फॉर्मूले जुबानी याद करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के 2 फॉर्मूले हैं डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा। अगर मैस गिवन हो तो उसे 1 मोल के मैस पर डिवाइड करें यानी मोलर मैस पर, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो उसे 1 मोल के पार्टिकल्स पर डिवाइड करें यानी एवोगैड्रोस नंबर पर। नाउ रीअरेंज द फॉर्मूलाज टू गेट मैस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैस मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें और पार्टिकल्स मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को ही एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें। आप इन फॉर्मूलों को इस फिगर की मदद से भी याद रख सकते हैं। मैस इन ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इसी तरतीब से लिखकर कर्व्ड एरोज ड्रॉ करें, 2 मोल्स की जानिब आते हुए और 2 उससे दूर जाते हुए। अगर आपको मैस गिवन हो और मोल्स मालूम करने हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स मालूम करने हो देन यूज डिवीजन फॉर्मूली, और अगर मोल्स से मैस फाइंड करना हो या मोल्स से पार्टिकल्स फाइंड करने हो यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूली। एनीवेज, व्हेन मैस इज इन्वॉल्व्ड, दैट इज if mass is given or required, use molar mass as multiplying and dividing factor. और जब number of particles involved हों यानी number of particles मालूम करने हों या number of particles given हों, then use Avogadro's number as a multiplying and dividing factor. I hope you understand.
Let us now apply these formulae in solving numerical problems. Example 1.4 is calculate the gram molecule or number of moles in 40 gram of phosphoric acid. First of all, write the given data, which is the mass of phosphoric acid, and then required is number of gram molecule of phosphoric acid. So which formula you will use to solve this problem? Look at the formulas chart. You are given mass and have to find moles, so remove all this and use this formula. That is, divide the given mass by molar mass of phosphoric acid. For this purpose, first we calculate the molar mass of phosphoric acid, which is equal to 3 times the atomic mass of hydrogen. Atomic mass of phosphorus is taken once and 4 times the atomic mass of oxygen. Simplify to get 98, and the unit of molar mass is gram per mole. Now apply the formula, which is number of moles is equal to mass in gram divided by the molar mass of the substance, putting their values and simplifying to get 0.408 mole. This is your answer. Therefore, 40 gram of phosphoric acid will contain 0.408 gram molecule or moles. Next is example 1.5. You have a piece of coal or carbon weighing 9 gram. Calculate number of moles of coal in the given mass. So you are given mass again and have to find number of moles from it. So solve it just as example 1.4. First write the molar mass of carbon, which is 12 gram per mole, and then use the formula to find the number of moles. Divide the given mass by the molar mass of carbon, putting their values and simplifying to get 0.75 mole. Therefore, 9 gram of coal is equivalent to 0.75 mole. Example 1.6. Calculate the number of moles, number of molecules and number of atoms present in 6 gram of water. So we are given the mass of water and required is number of moles, number of molecules and number of atoms present in 6 gram of water. Again, look at the formula chart. Removing the irrelevant, we are left with this. So you have to follow this route. That is, first find number of moles using this formula and then number of molecules using this formula. For this purpose, calculate the molar mass of water first, which is 18 gram per mole, and then use this formula to find number of moles of it, which is 0.33 mole. Now, number of molecules of water can be found by multiplying number of moles with Avogadro's number, putting their values and multiplying to get 1.98 into 10 raised to the power 23 molecules. Now, number of atoms. It is clear from molecular formula of water that its one molecule H2O consists of 3 atoms. So, total number of atoms is 3 times 1.98 into 10 raised to the power 23, because we have 1.98 into 10 raised to the power 23 molecules of water and each consists of 3 atoms. So multiplying them, we get 5.94 into 10 raised to the power 23 atoms. So 6 gram of water is equivalent to 0.33 mole and contains 1.98 into 10 raised to the power 23 molecules and 5.94 into 10 raised to the power 23 atoms. I hope you understand. So last example is 1.7. There are 3.01 into 10 to the power 23 molecules of CO2 present in a container. Calculate the number of moles and its mass. So this time we are given number of molecules and have to find number of moles
and mass. So look at this formula chart. I delete the irrelevant, so we are left with this root. That is, we first divide the number of molecules by Avogadro's number to get number of moles, and then multiplying number of moles by the molar mass of CO2 to get its mass. So first we find number of moles of CO2, number of molecules divided by Avogadro's number, putting their values, we get 0.5 mole. Now, to find the mass of carbon dioxide, we first calculate its molar mass, which is 44 gram per mole. Now, mass of CO2 is equal to number of moles of CO2 multiplied by its molar mass, as we have determined its number of moles, which is 0.5, and its molar mass is 44, so multiplying them we get 22 gram. So 3.01 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide is equal to 0.5 mole and 22 gram. Now I would ask you to open your book to page 26 for the numericals given in exercise. I'll solve all of them for you, but in my own order. एक और चीज़ जिसके बारे में स्टूडेंट्स मुझे बारहा कह चुके हैं वो ये कि उर्दू में लेक्चर डिलीवर करें. So I'm gonna deliver a bilingual lecture today. Numerical number 6 is exactly similar to just solved example number 1.7. Its statement is, what is the mass of 2.05 into 10 raised to the power 16 molecules of sulfuric acid? So again we are given the number of molecules and have to find the mass of sulfuric acid. Formula chart को देखिए, irrelevant को छोड़ दीजिए, तो आपको वही रूट इख्तियार करना है जैसे कि एग्जाम्पल 1.7 में किया. तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एटॉमिक मासेस पुट किए, वी गेट 98 ग्राम पर मोल. फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मालूम करने के लिए जो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको एवोगाड्रोस नंबर पे डिवाइड करते हैं. पुटिंग देयर वैल्यूज वी गेट 3.405 into 10 raised to the power minus 8 मोल. अब इन नंबर ऑफ मोल्स को जो हासिल हुए इनको सल्फ्यूरिक एसिड के मोलर मास यानी 98 से मल्टीप्लाई करके मास फाइंड करें. Putting their values and simplifying, we get 3.34 into 10 raised to the power minus 6 gram. So this is your answer. Numerical number 1. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it will you weigh? How many grams? So you are given number of moles and you have to find mass of sulfuric acid. Look at the formula chart again and see where you are standing and where to go. तो मालूम हुआ कि हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, यानी मोल्स से mass मालूम करना है. So use this formula, that is moles multiplied by the molar mass. So first you find molar mass of sulfuric acid, which is 98 gram per mole, and then use the formula. Mass of H2SO4 is equal to number of moles multiplied by molar mass, putting their values and simplifying to get 490 gram. Numerical number 4a. Calculate the number of molecules in 16 gram of H2CO3, which is carbonic acid. So we are given mass of carbonic acid and have to find its number of molecules. Formula chart को देखिए, irrelevant को छोड़ दीजिए, ये रूट इख्तियार करना है. यानी सबसे पहले मोलर मास फाइंड करें H2CO3 का जो कि 62 ग्राम पर मोल है.
उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2CO3 मालूम करने के लिए उसका गिवन मास को मोलर मास पे डिवाइड करें तो वी गेट 0.258 moles. And then number of molecules of H2CO3 are obtained by multiplying number of moles with Avogadro's number. Putting their values and simplifying, we get 1.55 into 10 raised to the power 23 molecules. 4b और 4c exactly इसी तरीके से हल होंगे. Numerical 4b. Calculate the number of molecules in 20 gram of HNO3. So इसको बिल्कुल 4a की तरह से हल करेंगे. सबसे पहले गिवन डाटा लिख के, रिक्वायर्ड लिख के, उसके बाद मोलर मास HNO3 का फाइंड किया जो कि 63 ग्राम पर मोल है. उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स जब आ गए तो उनको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हासिल हो गए. आई होप यू अंडरस्टैंड. Numerical 4c. Calculate the number of molecules in 30 gram of glucose. Mass of glucose is given 30 gram. Required is number of molecules of glucose. तो बिल्कुल उसी तरह से हल करें जैसे 4a और 4b में किया. यानी पहले मोलर मास मालूम करें ग्लूकोज का जो कि 180 ग्राम पर मोल के बराबर है. उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें जो कि 0.167 के बराबर हैं. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. सो द आंसर इज 1.0 into 10 raised to the power 23 molecules. 30 gram of glucose contains 1.00 into 10 raised to the power 23 molecules. Numerical 9 भी 4ABC की तरह से सॉल्व करें. How many molecules of HCl will be required to have 10 gram of it? So we are given mass of HCl and have to calculate number of molecules. तो सबसे पहले molar mass of HCl which is 36.5 gram per mole. उसके बाद number of moles find करें इसके given mass को molar mass पे divide करके. तो ये हैं 0.274 mole. And finally, number of molecules of HCl are obtained by multiplying number of moles with Na. Putting their values and simplifying, we get 1.65 into 10 raised to the power 23 molecules. Numerical number 5a, b, c भी 4abc की तरह से ही हल होंगे, सिर्फ एक फर्क के साथ जो मैं आपको आखिरी स्टेप में बताऊंगा. Calculate the number of ions in 10 gram of aluminium chloride, which is an ionic compound. So we are given its mass and have to find its number of ions. फॉर्मूला चार्ट को देखिए. mass से स्टार्ट करते हुए moles मालूम करें और फिर number of particles फाइंड करें. मगर सबसे पहले molar mass of aluminium chloride, which is 133.5 gram per mole. Using this molar mass and the given mass in gram, you can find its number of moles. Putting their values, we get 0.0749 mole. Now, number of formula units of AlCl3 can be found using this formula. That is, number of moles multiplied by Avogadro's number. Number of formula units of AlCl3 become equal to 4.51 into 10 raised to the power 22. Because it is an ionic compound and consists of formula units. But एक फॉर्मूला यूनिट में झांक कर देखिए तो आपको 4 आयंस दिखेंगे. It is clear from empirical formula of aluminium chloride that one formula unit of AlCl3 consists of 4 ions. एक एल्यूमिनियम का आयन और 3 क्लोराइड आयंस. सो एक फॉर्मूला यूनिट में 4 आयंस, तो 4.51 into 10 raised to the power 22 फॉर्मूला यूनिट्स में कितने आयंस होंगे?
4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. So we get 1.80 into 10 raised to the power 23 ions. ये टोटल आयंस हैं एल्यूमिनियम और क्लोराइड के. न्यूमेरिकल नंबर 5b में सब्सटेंस चेंज और मैस चेंज तरीक़ाकार बिल्कुल वही जैसे कि 5a में था. 30 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड में नंबर ऑफ आयंस फाइंड करें. सो गिवन डेटा लिखा, रिक्वायर्ड एंड मोलर मास फाइंड किया बेरियम क्लोराइड का. फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें यूजिंग दिस फार्मूला, पुटिंग देयर वैल्यूज टू गेट 0.144 मोल. नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड हासिल करें. अब it is clear from empirical formula of barium chloride that one formula unit of BaCl2 consists of 3 ions, एक बेरियम का और 2 क्लोराइड के आयंस. सो टोटल 3 आयंस प्रेजेंट हैं एक फॉर्मूला यूनिट में. And we have 8.67 into 10 raised to the power 22 formula units of it. So total number of ions is equal to 3 times 8.67 into 10 to the power 22. That is equal to 2.60 into 10 to the power 23 ions. I hope you understand. Numerical number 5c. Calculate the number of ions in 58 gram of aqueous H2SO4. Now H2SO4 is a covalent compound, but it ionizes in aqueous solution. That is its solution in water. So we are given the mass of sulfuric acid and have to find its number of ions in aqueous solution of it. So first of all we find its molar mass, which is 98 gram per mole, and then number of moles using this formula, putting the values, we get 0.592 mole. Number of moles को multiply करें Avogadro's number से to get number of molecules of H2SO4, not formula unit, because sulfuric acid consists of molecules. So we get 3.56 into 10 raised to the power 23 molecules. ये सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर में डाले. Now it is clear from molecular formula of H2SO4 that its one molecule ionizes in water to give 3 ions like this. H2SO4 आयनाइज होकर 2 हाइड्रोजन आयंस और एक सल्फेट का आयन प्रोड्यूस करता है. सो टोटल 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे एक मॉलिक्यूल से. हमारे पास 3.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक के अंदर 3 आयंस. सो टोटल नंबर ऑफ आयंस इज 3 times 3.56 into 10 to the power 23, which is 1.068 into 10 raised to the power 24 ions. This is the answer. Numerical number 8. How many ions of sodium and chloride will be present in 30 gram of NaCl? यानी आपको NaCl के 30 ग्राम में आयंस बताने सोडियम और क्लोराइड के, यानी कुल टोटल आयंस मालूम करने हैं. सो वी आर गिवन इट्स मास एंड हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन NaCl सैंपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास ऑफ NaCl जो कि 58.5 ग्राम पर मोल के बराबर. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए इसके मास को मोलर मास पे डिवाइड करें. मास इज गिवन विच इज 30 एंड मोलर मास जस्ट फाइंड किया हमने 58.5, डिवाइड किया तो 0.5128 मोल हासिल हुए. अब इन नंबर ऑफ मोल्स को अगर एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके फॉर्मूला यूनिट्स मालूम होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं, because NaCl consists of formula units, not on molecules. So number of formula units of NaCl is equal to number of moles into Na, putting their values and simplifying to get its total number of formula units, which is 3.087 into 10 raised to the power 23.
Now it is clear from its empirical formula that one formula unit of NaCl consists of two ions, एक सोडियम का और एक क्लोराइड का आयन. So 3.087 into 10 raised to the power 23 formula units will contain twice the number of ions. That is 6.17 into 10 raised to the power 23 ions. I hope you understand. Numerical number 2. How many calcium and carbonate ions are present in 40 gram of calcium carbonate? So we are given the mass of calcium carbonate and have to find number of calcium ions and number of carbonate ions separately. For this purpose, you calculate its molar mass, which is 100 gram per mole. Number of moles find करने के लिए mass divided by molar mass, which is 0.4. Number of formula units find करने के लिए number of moles को Na से multiply कर दें. So we have 2.41 into 10 raised to the power 23 formula units of calcium carbonate. Now it is clear from its empirical formula that one formula unit of calcium carbonate consists of one calcium ion and one carbonate ion. So total number of calcium ions is equal to 2.41 into 10 raised to the power 23, and total number of carbonate ions are also 2.41 into 10 raised to the power 23. Numerical number 7 is how many atoms are required to prepare 60 gram of nitric acid. So we are given the mass of nitric acid and have to find total number of atoms which are required to prepare 60 gram of its sample. First of all, calculate its molar mass, which is 63 gram per mole. Number of moles find करने के लिए given mass को इसके molar mass पे divide कर दें. We get 0.952 mole. Then its number of molecules are obtained by multiplying number of moles with Avogadro's number. Putting their values, we get 5.73 into 10 to the power 23 molecules. So 5.73 into 10 to the power 23 molecules of nitric acid banane. It is clear from the molecular formula of HNO3 that total 5 atoms are required to prepare its one molecule. एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के. So total number of atoms needed to prepare 5.73 into 10 to the power 23 molecules is equal to 5 into 5.73 into 10 to the power 23, which is equal to 2.87 into 10 to the power 24 atoms. Numerical number 10. How many grams of magnesium will have the same number of atoms as 6 grams of carbon have? उर्दू में मैग्नीशियम का वो mass बताएं जिसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हों मैग्नीशियम के जितने 6 ग्राम कार्बन में पाए जाते हैं. सो वी आर गिवन mass of carbon and we are asked to find the mass of magnesium, which has the same number of atoms as 6 gram of carbon has. So फॉर्मूला चार्ट को देखिए, ये सारे रूट्स हमें इख्तियार करने हैं. इस दफा चारों फॉर्मूले इसमें यूज होंगे. देखिए किस तरह. फर्स्ट राइट द मोलर मास ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम एंड देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, बिकॉज कार्बन का मास गिवन है. सो कार्बन के मोल्स फाइंड करके और फिर कार्बन के एटम्स तक पहुंचिए. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए इसके गिवन मास को, जो कि 6 ग्राम है, इसके मोलर मास 12 पे डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.5 मोल. इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके कार्बन के एटम्स मालूम कर लें, जो कि 3.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 के बराबर है. अब मैग्नीशियम के भी इतने ही अगर एटम्स हों हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ही बराबर है. सो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स 3.01 इंटू 10 पर 23 हैं हमारे पास. अब इतने नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स के मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए
मैग्नीशियम के एटम्स को डिवाइड कर दें एवोगैड्रोस नंबर पे, वी गेट 0.5 मोल. सो मैग्नीशियम के मोल्स मालूम हो गए. नाउ मल्टीप्लाई its number of moles with the molar mass of magnesium to get its mass, which is 12 gram. I hope you understand. So only one numerical left, that is numerical number 3, and that is if you have 6.02 into 10 raised to the power 23 ions of aluminium, how many sulfate ions will be required to prepare aluminium sulfate? Al2SO4 whole thrice is aluminium sulfate. Now given is number of aluminium ions, 6.02 into 10 raised to the power 23, and number of sulfate ions are required. Carefully read the statement of the question again. Now it is clear from empirical formula of aluminium sulfate that aluminium and sulfate ions are combined in the ratio 2 to 3. So 2 aluminium ions combined with sulfate ions equals 3. 1 aluminium ion combines with sulfate ions equals 3 by 2. I'm using unitary method. So हमारे पास 6.02 into 10 raised to the power 23 aluminium ions हैं. So they will combine with sulfate ions equals 3 by 2 को 6.02 into 10 raised to the power 23 से multiply करते हैं. So we get 9.03 into 10 raised to the power 23 sulfate ions. This is the answer. I hope you understand. If you have any questions, don't hesitate to ask. सवाल पूछते वक्त हरगिज मत हिचकिचाइए. शुक्रिया.